Okay. Um, Fine. So we will start with Karl Pearson correlation today. Okay. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, fine. So just a bit introduction about Karl Pearson correlation. Now, what does this term correlation mean? Very, very important thing. What does correlation mean? So today we are going to cover Karl Pearson correlation. Tomorrow we'll be covering Spearman rank correlation followed by regression. Okay. So today just the first part we'll cover. Now, what does this correlation mean? Relation is there. The word relation is there. So that means what? We are trying to find out the relationship. Okay. Relationship that exists between two or more variables. दो variables होते हैं. Either दो या दो से ज्यादा. ठीक है. अगर दो से ज्यादा variables के बीच में अगर हम relationship जानने की कोशिश करते हैं, that is known as correlation. जैसे for example, production एंड रेनफॉल. ठीक है. आप सबको पता है रेनफॉल डिपेंड्स और प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन रेनफॉल. अगर रेनफॉल नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं. सो मेरा ये दो वेरिएबल बन गया. रेनफॉल है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रोडक्शन बन गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप जानने की कोशिश करूंगी देन आई विल बी यूजिंग अ कोरिलेशन मेथड. Okay. If two variables are related to each other in such a way that change in one creates a corresponding change in the other, then the variables are said to be correlated. जैसे अगर रेनफॉल घट गया तो मेरा उस साल प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा. रेनफॉल अगर मेरा बहुत अच्छा रेनफॉल बहुत अच्छे से हुआ है जितना चाहिए जमीन को तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा. सो अगर एक वेरिएबल में मेरा चेंजेस हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी मेरा चेंज होगा. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? So some examples of such relationships are, agar if we want to find out the relationship between height and weight, then also see if your height increases then weight increases, that is a correlation, or somehow it decreases. So if there is a change in one variable, another variable is also getting affected. This also we saw rainfall and wheat production. अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कमोडिटी, अगर चीनी सपोज शुगर I want to purchase and price बढ़ गया तो depending upon my purpose I'll go for more purchase or less purchase. अगर हस्बैंड का एज बढ़ रहा है तो वाइफ का एज भी तो बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं. Dose of insulin and blood sugar. So what is happening actually? See, if there is a change in one variable, then automatically another variable is either increasing or decreasing, but it is changing. Okay. Correlation is sometimes termed as covariation. ठीक है, correlation को हम covariation भी बोलते हैं. The measure of correlation is called coefficient of correlation. समझ में आया? Any doubt in this slide? Anyone? No, ma'am. Okay. Now, what are the types of correlation? First category is positive and negative correlation. जैसे अगर मानो एज ऑफ हस्बैंड अगर मेरा बढ़ रहा है, ओके, हस्बैंड का एज बढ़ रहा है, वाइफ का एज बढ़ेगा या घटेगा? बोलो. If the age of the husband is increasing, then what will happen? The age of wife, will it increase or decrease? It will increase. Increase. Yes. Yes. So when both the variables are in the same direction, then it is said to be positive, right? In the same direction, it can be either positive or it can be either negative. If one suppose price of the particular car is decreasing, demand for the car is decreasing, so it is a case of positive correlation. Both the variables has to go in one direction. Okay, if one variable increases, other increases. If one decreases, other also decreases. Then the variables are called as
positive, are said to have positive correlation. Negative correlation, opposite direction. अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा. If one variable increases, the other variable decreases. Right? So that is known as a negative correlation. Another category is simple and multiple correlation. Simple मतलब सिर्फ दो ही वेरिएबल, जैसे मैं यहाँ पे ली हूँ एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, रेनफॉल एंड प्रोडक्शन. दैट इज अ केस ऑफ सिंपल कोरिलेशन. बट मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? अगर तीन से ज्यादा वेरिएबल हैं तो हम उसको मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं. मानो वीट, अगर इफ आई वांट टू गो फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ वीट, okay, so wheat is a variable for me, rainfall is a variable for me, fertilizers is a variable for me. So what will happen? It is a case of multiple correlation. तीन या तीन से ज्यादा, उन तीनों के बीच में मैं रिलेशनशिप जानने की कोशिश कर रही हूँ. So in that case it is known as a multiple correlation. Understood what is positive, negative, simple and multiple correlation? Any doubt? Okay, let's move to the next part. Linear and non-linear correlation, another category. Linear मतलब क्या? एक constant ratio होनी चाहिए. If the amount of change in one variable bears a constant ratio to the amount of change in the other variable. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मिल्क एंड चीज. मिल्क का क्वांटिटी है 10, 20, 30, 40, 50. चीज का है 2, 4, 6, 8, 10. इसका हम रेशियो निकालते हैं, क्या होगा? 1:5, राइट? 1 and 5. यहाँ भी देखो 8 into 5, 40. So 1:5. 6 into 5, 40. 1:5. 4 into 5 is 20. 1:5. And 2 into 5 is 10. So 1:5. देखो आप लोग रेशियो सेम है कि नहीं? Constant ratio in all the categories. Then it is known as a linear correlation. Non-linear क्या है? It does not bear a constant ratio. Very very easy. To the amount of change in the other variables. तब हम उसको बोलते हैं non-linear. ठीक है? तो यहाँ पे linear correlation एक straight line बनेगा, either this way or this way or this way. But in case of non-linear correlation, the graph, the curve will be like this. The shape of the line will be a curve. It can never be a straight line. Why? Because the ratios are not same. Okay. So this is how the graphs of linear and non-linear correlation looks like. Fine. So this you can later on see, which is a positive correlation, negative correlation, and no correlation. That this one we can see later. Okay, now see, what are the methods of studying correlation? There are various methods of studying correlation: graphic method and algebraic method. Graphic method, we have scatter diagram method and graphic method. Scatter diagram, see, it's a diagrammatic representation of data. Okay, it will be like this. Suppose this is x-axis and y-axis, so somewhere they will be putting dots like this, either like this. This is a case of zero correlation, or it will be a straight line. Scatter dots, diagrammatically we are putting it. So that is a case of scatter diagram method. And under algebraic method, we have Karl Pearson, rank method, and concurrent deviation method. Okay, so we will be focusing on today's class on Karl Pearson correlation coefficient. Okay, so what exactly this Karl Pearson coefficient of correlation mean? Okay, correlation we understood. Correlation coefficient is actually giving us a direction as well as degree of relationship between the variables. Okay, that is why we are going for finding out coefficient of correlation. This is the formula. Two variables are there, x and y. Just write the formula in your notebook somewhere.
Coefficient of correlation is written as small r, covariance of x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. Just write this formula somewhere. This expression is known as Pearson products moment formula. And normally it is used in case of a linear correlation between x and y. Linear correlation means all the variables have a constant ratio. Okay. So what are the limitations of correlation coefficient along with other information helps in estimating the value of the dependent variable from the unknown value of independent variable. Same thing. Okay, we are estimating the value of dependent variable like rainfall. Rainfall was an independent variable, but depending upon the rainfall, we are estimating how much production we might get. So we are estimating the dependent variable on the basis of independent variable. Okay. Now, what are the limitations of Karl Pearson's coefficient of correlation? बहुत ही important part है ये. Maximum questions यहाँ से आ सकते हैं. देखो, जो short questions है, which is not there, of course, for the PG students, and it is there for anyone who is preparing NET. It's highly required. So, assumption of linear relationship. Limitations. The assumption of linear relationship between the variables may or may not always hold true. Okay. जैसे हम लोग देखते हैं रेनफॉल एंड प्रोडक्शन, तो वो बोल रहे हैं कि आप हमेशा ये दो वेरिएबल काम करेगा, इसका कोई गारंटी हम नहीं दे सकते हैं. मे और मे नॉट बी ट्रू. सो assumption of linear relationship will exist that we do not know. Time consuming obviously है because you have to calculate this and you have to go to the final word answer. Affected by extreme values. अगर आपके डेटा सेट में बहुत ही एक्सट्रीम सेट वैल्यूज हैं, जैसे एक डेटा आपका 2 है, दूसरा आपका हो गया 50, तो ये जो डेटा सेट है इन दोनों के बीच में एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, सो डेटा विल बी अफेक्टेड एंड हमको केयरफुल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है. ऐसा नहीं कि कुछ भी हम ले सकते हैं. वी हैव टू गो फॉर अ प्रॉपर कंक्लूजन बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन. ओके. So these are the limitations of Karl Pearson's coefficient of correlation. Clear all of you? Yes, ma'am. Any doubts, please ask me. Okay, anytime you can ask me. Okay, fine. Let's move to the next category. Please, all of you, jot down this thing. Remember always that the value of correlation coefficient always lies between -1 and +1. कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो आपका वैल्यू हमेशा -1 से +1 के भीतर ही रहना चाहिए. अगर वो -1 से +1 के रेंज से बाहर जा रहा है then definitely your answer is wrong. You have to keep that in mind. So ये सारे इंटरप्रिटेशंस हैं. अगर आपका वैल्यू r इक्वल्स टू +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. अगर r इक्वल्स टू -1 है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. r अगर 0 है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है. 0.75 से लेके 1 के अंदर अगर आपका r का वैल्यू आ रहा है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन. -0.75 से लेके -1 तो आपका हाई नेगेटिव कोरिलेशन. +0.5 से लेके 0.75 मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन. -0.5 से लेके -0.75 तो आ जाएगा आपका मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन. r अगर 0.5 से छोटा है वैल्यू तो आपका लो पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर r आपका -0.5 से ज्यादा है तो आपका लो नेगेटिव कोरिलेशन. Okay, so these are the interpretations. After practicing many questions, automatically ये दिमाग में आएगा कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, whether it is perfect, moderate or low. यही 3 चीज है ना, और high. Fine. So let's move to the calculations part. Okay, these are the properties of coefficient of correlation. This is independent of choice of origin and choice of scale. Okay. इसका मतलब क्या है, जो r निकला हम लोग का फाइनल वैल्यू जो निकलेगा
it is not affected by the individual values of x and y. Okay, it is not at all affected. That is why it is known as choice of origin. Choice of scale भी बोला जा रहा है because whatever value of r we get, it is not affected by the individual values of x or y. अगर वो increase हो रहे हैं, decrease हो रहे हैं, multiplication हो रहा है, उसका divide हो रहा है, कुछ भी, कोई भी factor में it is not affected. Next, independent of units of measurement, the correlation coefficient r is a pure number and is independent of the units of measurement. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम x को रिप्रेजेंट करते हैं हाइट में और y को रिप्रेजेंट करते हैं वेट में, वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं y और हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, सो जो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलेगा बिटवीन x एंड y वो ना ही बढ़ेगा इंचेस में नॉर एलबीएस में, बट इट इज ओनली अ नंबर. यू कैन नॉट से जो भी वैल्यू निकला this much inches or this much lbs. No, you cannot say that. It is just a number and it has to lie between -1 and +1. अच्छा, ये जो coefficient of correlation is the geometric mean. अगर आप x and y का geometric mean निकालोगे, एक्स एंड वाई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालोगे तो आपका आर वैल्यू निकल के आएगा. इन वेरियस शॉर्ट क्वेश्चंस इन इंटरनल्स और इन यूजीसी नेट क्वेश्चंस वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसा वैल्यू दे देंगे, बी एक्स वाई दे देंगे, बी वाई एक्स दे देंगे, दे विल बी आस्किंग यू टू फाइंड आउट आर वैल्यू, or they will be giving you bxy or and r value and they will be asking you to find out byx. So this is the formula, just remember this formula. It comes as a short note and very very important question. Okay, so understood about the properties of coefficient of correlation? Any doubt in that? Fine. नाउ एक्चुअल कैलकुलेशन. ये कैलकुलेशन अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपका कोरिलेशन हो जाएगा पूरा. ओके, फॉर्मूला है ये वाला. देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम एक्चुअल मीन. अगर आप लोग मीन का क्लास मिस किए हैं देन आई विल बी शेयरिंग यू द लिंक. ओके, and you can see how the mean calculations are done. when जब हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्चुअल मीन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अज्यूम मीन लेके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टेप डेविएशन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक द एक्चुअल मीन. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन. सो द फॉर्मूला इज r equals to summation small xy divided by square root of summation x square into summation y square. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, summation xy divided by n summation x standard deviation y. Sorry, n standard deviation x standard deviation y. So please write the formula, then I'll show how this calculation is going to be done. Okay, please write. If you don't do this, then I am sorry, you won't be able to understand. It's a hard truth. Okay, so you have to do it. All of you wrote some the formulas? Understood? Okay, fine. So how you are going to calculate? This is the data set x and y. Write like this. Okay guys, write like in a tabular format. 1 2 3 4 5 6 7. So you have to make 7 columns and you have to make 7 rows. Okay, do a table. Seven columns and 7 rows. Fine.
Okay, now see what happens. First, x. So what you're going to find out, you will be finding small x. Now I had said we have to find out from the actual mean. So how would you find out actual mean? कैसे आप निकालोगे actual mean? Okay. Any idea how to find out actual mean? We will go for an average, right? Fine. I think you people are getting confused. Let me do the problem with you. Just a minute. Just give me 1 minute. I'll do it with you. तब आपको clearly समझ में आएगा. Okay. White screen, and then we'll go for a calculation text. Okay. So I said you have two datas, two table or two columns, right? X and Y. Let me write it here. X, and you have Y, of course. Now what are the values of X? 1, Y is 10. Okay, let me not write Y. First let us do X and then we'll go to Y. Then 2, then 3, then 4, then 5. Clear? So I said you have to find out the small x value. Now how small x? Small x you can calculate with the like after you find out the mean. Now how you're going to find out mean? Mean will be summation x. Let me write like this. It's summation x divided by n. Now what is summation x? Total of everything. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. That is 15 divided by 5. That is equal to 3. So you got mean is equal to 3. So how would you find out small x? X is equal to x minus mean. Right? X minus mean. So what will be your values? 1 minus 3. So it will be minus 2. 2 minus 3. So it will be minus 1. 3 minus 3, it will be 0. 4 minus 3, it will be 1. 5 minus 3, it will be 2. Understood or not? Any issues? मुस्कान समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. मनीषा, प्रीति, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. मैं स्टेप वाइज जा रही हूँ. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके. नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स स्क्वायर. फॉर्मूला देखो, जो फॉर्मूला आप लोग लिखे हो, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वहां पे? समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो डिफिकल्ट होगा, राइट? सो वी हैव टू फाइंड आउट समेशन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर. I cannot write unfortunately. Just imagine, okay? X square. So minus 2 का x square कितना होगा? 4 minus 2 into minus 2 4. 1 का 1, 0 का 0, 1 का again 1 and 2 का 4. Write the total. सारे आइटम्स का टोटल आप नीचे लिखो. ओके, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 10. क्लियर? यहां तक x का जो हम कैलकुलेट किए. Yes, लेट्स ma'am. मूव टू y. Yes, ma'am. हाँ, y में क्या क्या वैल्यूज थे आपका? 10, 20, सॉरी 10, 20, 30, 40, 50. राइट? सो अगर आपका टोटल हम देखने जाएं तो आपका टोटल आ रहा है यहाँ पे 150. तो इफ इट इज 150, सो y बार और मीन ऑफ y कितना आएगा? विल बी 150 डिवाइडेड बाय 5. That will be 30. समझ में आया? How you got 30? Same procedure. Small y equals to
capital Y minus mean. So 10 minus 30, it will be minus 20. 20 minus 30, it will be minus 10. 30 minus 30, it will be 0. 40 minus 30, it will be 10. 50 minus 30, it will be 20. Again, the value of this will be 0. फिर आप क्या निकालोगे? Y square निकालोगे. Right, Y square. Minus 20 का स्क्वायर कितना है? 400. 10 का स्क्वायर कितना है? 100. 0 का स्क्वायर है 0. 10 का स्क्वायर है 100. 20 का स्क्वायर है 400. सो आपका सम टोटल कितना आ रहा है? 1000. अभी आप फॉर्मूला देखो, आपको और क्या चीज जरूरत है? यस प्रीति, गुड. आपने x निकाला, x स्क्वायर निकाला, y स्क्वायर निकाल दिए. और एक चीज हमको चाहिए. व्हाट इज दैट? वी हैव टू फाइंड आउट x into y. That value is also required. Small x into small y. Minus 2 into minus 20. तो आपका वैल्यू क्या आएगा? 40. सॉरी 40. माइनस माइनस प्लस हो जाता है. नेक्स्ट होगा आपका minus 1 into minus 10. 10. नेक्स्ट होगा आपका 0. नेक्स्ट will be your 20. No, not 20. 1 into 10. 10. And the next will be your 40. Clear? So that comes to your 100. Have I done it correct? Yes, ma'am. Okay. Just a minute, let me cross check. Yes. So that comes to 100 now. अभी आप फॉर्मूला में डालो उसको वैल्यूज. यहां तक सबको समझ में आया? आदर्श, देवाशीष, दीपिका, Manisha, have you all done the calculation till this much? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सादिया, स्नता साहू, श्वेता, सुभजीत, आप लोग किए हो सारा कैलकुलेशंस? Yes, ma'am. Okay, fine. So let me close the screen and we'll go back to the original question. Okay. देखो यहाँ पे there's a mistake here, so that is why I was stopping there. 1 into 20 is 20. Guys, can you cross check with the calculation that we did? Is it correct? So 50 minus 30 is 20, 40 minus 30 is 10. Okay, that I have done the mistake there. No one is saying me. Okay, so the values you will get like this: 40, 10, 20, 20. Just cross check these two columns, both of you, all of you. Okay, so now n is equal to 5. Summation x we got 3. Summation y, or sorry, mean of x is equal to 3. Mean of y is equal to 30. Now we have to find out r. In the left side of your pic, you have seen the formula. This is your formula that we are going to use because we are not finding out standard deviation. So we'll use summation xy divided by square root of summation x square into y square. Just we will put those values. हम लोग अभी वो values apply करेंगे. R is equal to summation xy. Summation xy तो मेरा 90 है. तो 90 divided by ये बन गया आपका 10. ये हो गया आपका 1000. तो here it comes 10,000. So 10,000 is nothing but the square of 100. So 90 divided by 100. The value is plus 0.9. So when the value is 0.9, what will be your interpretation here? Here the interpretation will be there exists a high positive correlation. Clear? समझ में आया? How we found it? How we found this value? Any doubt?
No, ma'am. ओके फाइन. सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट केस में मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पे अज्यूम मीन में हम कैसे निकालेंगे. ओके, अज्यूम मीन में कैसे हम निकालेंगे. Same procedure. These are the different formulas. Depending upon what is given in your question, you can use it. Normally, we go for this formula. The first case, very simple one. Okay, दिख रहा है आपको complicated, but actually में है नहीं. Right? तो हम लोग ज्यादातर यही use करते हैं हमेशा. So assume mean में क्या होता है? We are taking a assumption that ये हमारा mean हो सकता है. Right? So same thing, same data 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. तो D यहाँ पे D का वैल्यू है D इक्वल्स टू X माइनस assume mean. तो assume mean हम कहाँ से लेते हैं? X सीरीज से ही हम चूज करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. We pick up any value and we say that this is the assumption mean, assume mean. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 लिया. ठीक है. So what will be my this value? Dx is equal to x minus 4. 1 minus 4 is equal to minus 3. 2 minus 4 is equal to minus 2. 3 minus 4 is equal to minus 1. 4 minus 4 is equal to 0. And 5 minus 4 is equal to 1. Total अगर हम करें तो minus 5 निकल रहा है value. Similarly, हम पहले पिछले केस में क्या किए थे? X square किए थे. We are doing D square X. Nothing extra. See, don't get feared. Nothing extra. D square X. तो हम लोग सिर्फ स्क्वायर वैल्यू निकाल दिया एंड वी वेंट फॉर अ टोटल. नेक्स्ट आ गया आपका y. y में वैसे ही हम एक अज्यूम ले लेते हैं. यहाँ पे उन्होंने 40 को अज्यूम लिया, राइट, एंड देन ही वेंट फॉर फाइंडिंग आउट dy. dy इज इक्वल टू, ओके दीपिका, नो प्रॉब्लम, y माइनस 40. ठीक है. सो 40, 10 minus 40 minus 30, 20 minus 40 minus 20, 30 minus 40 ये आपका आ रहा है minus 10, 50 minus 40 ये आपका आ रहा है 10, एंड 40 minus 40 ये आपका आ गया 0. ओके, नेक्स्ट इज d square y. अब हम इसका सिर्फ स्क्वायर निकालेंगे. माइनस 30 का स्क्वायर हो गया आपका 900, 20 का स्क्वायर है 400, 10 का स्क्वायर है 100, 10 का स्क्वायर है 100, 0 का 0. तो अगर हम टोटल करने जाए तो इट इज कमिंग 1500. दिस इज माइनस 50. आखिरी में हमने क्या किया था? x एंड y मल्टीप्लाई किए थे, राइट. यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं. dx इंटू dy. x वैल्यू यहाँ है, y वैल्यू यहाँ है. No, this value and this value. So minus 3 into minus 30 आ रहा है आपका 90. minus 2 minus 20 40. minus 1 and minus 10 आ रहा है आपका 10. 0 into 10 0, 1 into 0 0. So अगर आप ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 140. Now just apply it in the formula. Summation dx dy. You can easily apply 140 minus summation dx into dy divided by n. Minus 5 into minus 50. Individual. यहाँ पे आपको ये टोटल वाला नहीं डालना है, इंडिविजुअल डालना है. minus 5 into minus 50 divided by 5. होल डिवाइडेड बाय summation d square x. ये हो गया आपका 15. यहां से आप वैल्यू ले रहे हो 15. इंडिविजुअल का कितना है? सबमिशन dx, मतलब माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. सिमिलरली समेशन डी स्क्वायर y का है 1500, एंड इंडिविजुअली अगर हम dy का वैल्यू देखें तो माइनस 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू 0.9. So when you are getting the 0.9 value, it means high positive correlation exists among the variables. Clear? All of you? Yes, ma'am. Okay. So, see, I know it is not fruitful here because you have to calculate on pen and paper. So what you can do is just
do these two problems, and in addition I'll be, if possible, I'll be sending one more problem. Okay, then what will happen, you can practice it. Once you practice it, and then later on you can ask me the doubts. See, in this particular part, let me show. Next part I have kept same actual deviations when no deviation are taken from the assumed mean. ओके यहाँ पे हम कोई डेविएशन नहीं ले रहे हैं. डिफरेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऊपर में. ओके, बट यू पीपल कैन रिकॉल एनी वन ऑफ द फॉर्मूला, आराम से आपको आंसर आएगा. नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फाइंड द कोरिलेशन ऑफ दीज टू वेरिएबल्स. तो आपको इनमें से जो भी फॉर्मूला आपको इजी लगता है वही फॉर्मूला आप लर्न करो, and you can apply it all the questions, same formula in all the questions. देखो मैं डेटा सेट तो सेम ही ले रही हूँ ना, x का वैल्यू 1 2 3 4 5 है, y का 10 20 30 50 40, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ डेटा में, मैं वही डेटा को डिफरेंट फॉर्मूलाज में आपको दिखा रही हूँ, ताकि जो भी फॉर्मूला आप लोगों को इजी है और इजी आ रहा है और इजी लग रहा है, यू कैन गो फॉर दैट. So this is calculation of coefficient of correlation by direct method. यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं लिया गया है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ये वाला, बहुत ही इजी है. यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं लिया हुआ है, तो सिर्फ x, x स्क्वायर, y एंड y स्क्वायर, एंड लास्ट को आप x y निकाल रहे हो. देखो सेम चीज उस तरफ हमने पिछले टाइम पे जो किया था वही है. सबमिशन x y मतलब ये वैल्यू minus summation x individual into summation y divided by n 5 whole divided by summation x square मतलब 55 minus 15 square divided by n 5 square root of summation y square मतलब आपका हो गया 5500 minus summation y 150 square, this is 150 square divided by 5. I would request all of you to do this within 2 minutes, this particular calculation. Please all of you do. At least practice hoga aap logon ka. Karo, then we will discuss. Please do everyone. And ask me in any case you are facing any difficulty, any doubts anywhere. Samajh mein aaya? Do this problem quickly. This is a direct method, okay? Are you people able to do? मुस्कान आपसे हो रहा है ये वाला कैलकुलेशन, कर रहे हो आप? Yes, ma'am, doing. मनीषा, what about you? Ma'am. Okay, समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Okay, प्रीति? Yes, ma'am. Good. हाँ, सुभजीत तो छोड़ो, ये बंदा गायब है. आदर्श? Yes, ma'am, doing. Okay, please do. Okay, Debashish and Shweta, you Debashish, do please do it. Okay. You want to say something, Debashish? Fine, no problem. So see what I have done. I'm saying using the same data set, and I'm doing with the help of different formulas.
Any problems? Anywhere? You are like हो नहीं पा रहे आपसे? Okay. 2 more minutes. Try to complete this. Shweta, please write in chat which part you are facing difficulty. Please write in the chat box. See, here what happens, 55 minus 15 square. Find out 15 square first. Okay, then go for whole divide. Bodmas rule we have to apply here. Okay, see, suppose I'm solving this part. This will be 55 minus 225 divided by 5. Now I have to go for a common LCM. So what will I do? 55 into 5. That will be my 275. So this will be 275. Now 275 minus 225 whole divided by 5. That will be 50 divided by 5. 50 divided by 5 is nothing but your 10. Got it? How I got 10 here? Understood how I got 10 here? Similarly, this side will be 2250. Yes, 15 square is 225 divided by 5. And if you multiply, this will be 27500. So again, same thing, 500 divided by 5. So 5000 divided by 5. So you will be ending up with 1000. So 10 into 1000 is 10,000 and 10,000 square root is 100. Understood this part or not? Shweta? Yes, ma'am, done. Fine. So guys, these are the ways how you can find out correlation. Okay. So the students, you can leave, and Muskan, you can leave. Manisha, Shweta, you please stay back. Others, you can leave for next class. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. So I'll be giving you the link for the next class. Okay. Okay, ma'am. So in correlation, if you have any questions, then please ask me later. Next class, we will go for rank correlation method.